For years, the government spending on public health services in India has been abysmally low, which has left the public health system in shambles. With little faith and next to nothing accessible in public health care, people in rural India have turned to the private sector for their medical needs. Being unregulated, unaccountable and expensive, high spends on private healthcare have pushed millions of families into debt and poverty. In an effort to improve and restructure India's rural public health system, the government introduced the National Rural Health Mission in 2005. Its aim was to provide quality healthcare through an affordable and accountable public health system. In spite of some initial gains, many provisions that were envisioned under NRHM are yet to be realized. One of the key aims of NRHM to make the country's public healthcare system accountable and people-oriented is through community participation. Oxfam India works in Maharashtra, Odisha, Jharkhand and Bihar to improve the delivery of public health services by enhancing the role of the community in monitoring and demanding basic health services and rights, tracking budgets allocated for health services and ensuring implementation of various health schemes available. It's mostly the women who bear the brunt of a poor health system, especially during pregnancy and childbirth. Sanjana, a young woman from Kochi village in Gadchiroli, Maharashtra, lost her first newborn because there was no ambulance available to take her to the district hospital. माझी डिलिव्हरी होईल असे म्हणत होते डॉक्टरला. त्यांनी माझे ऐकले नाही आणि जबरदस्ती हलविले. खून वगैरे नसे म्हणून जाताच्या वेळेस अर्ध्या रस्त्यातच माझी डिलिव्हरी झाली. पुराड्याच्या दवाखान्यात नेले आणि 1-2 घंट्यातच माझा मुलगा मरण पावला. Thousands of children like Sanjana's continue to die because their mothers do not receive the medical care they require on time. Oxfam India's focus is to ensure that women like Sanjana do not have to endure such experiences and get the medical help they rightly deserve. Through its partner Sathi, Oxfam India has been strengthening the process of community-based monitoring in villages through setting up of committees to monitor and improve public health delivery systems. पहले तो हमारे गांव के दवाखाना बहुत गंदगी थे जी, गंदगी थे और दवाखाने में जाने में कुछ ही सुविधा भी नहीं थे, साफ सुथरा भी नहीं थे. तो हमको दवाखाने पहले जाने के पहले तो नोटिस देना पड़ती डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर या नर्सा के पास देना पड़ती. तो हमको इतना डांटे पहले डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर नर्सा, ये क्या लाए तुमने अपनी दवाखाना में, इसको क्या करेंगे, उसे डांटते थे हमको. तो डांटते थे तो भी हम नहीं डरते. अपनी गट की महिला, अपनी परिसर संघ की महिला जा करके दवाखाना की चौकसी करती थी. This provision of community monitoring has given an opportunity to women's groups to empower themselves, especially in matters related to health and sanitation. They regularly visit the public health centers in their villages, monitor the facilities available, interact with the doctors and patients about the treatment given, and ensure that the benefits of government schemes like Janani Suraksha Yojana, a cash incentive for pregnant women to opt for institutional delivery, reach the community. पिछले 2 सालों में तो हमारा हर 3 माह में तो एक विजिट होता ही है यहाँ पर, और इनके साथ में हम सारी योजना क्या है उनको सही लाभ मिलता है नहीं, और यहाँ का साफ सफाई है, पेशेंट लोगों के साथ में हम मुलाकात करते हैं, उनको औषधि है, इंजेक्शन है, सारी सोई सुविधा है, मिलता है नहीं मिलता है, इस तरह से. और जननी सुरक्षा योजना के बारे में भी हम बार बार आकर हम डॉक्टर से ये करते रहते हैं कि एक आधी बाई को नहीं मिला, 15 दिन की 2 महीना ऐसे लेट हो गए, तो वो क्यों हो रहा है वो भी हम इनके साथ में संवाद करते रहते हैं. इसलिए अभी वो भी योजना भी सही टाइम में मिला जाता है. एक आधी बार अगर पैसा नहीं रहा तो 8-10 दिन ऐसे लेट हो जाते हैं जननी सुरक्षा योजना का, बाकी का तो सारे इसमें अभी बदल आ रहे हैं.
The impact of such community monitoring initiatives has indeed brought about positive changes at the village level. Not only is the public health system gradually changing for the better, the healthcare providers have also become accountable. तर मी अंगणवाडी चेक करायला जाते तेव्हाही स्पेशली लोकांना सांगते की तुम्हाला छोटासाही त्रास वाटला, सर्दी पण ही मोठी होऊन मग दुसऱ्या याच्यात रोगात ट्रान्सफर होऊ शकते, मग त्यांना मी त्याच्याबद्दल आयडिया देते. तर त्यांना पण असं वाटतं की मॅडम इतक्या चांगल्याने सांगतात. म्हणून आजकाल पेशंट आणि स्वतःहून येतात, ते असं काही सांगावं नाही लागत, मॅडम आमच्या बाळाला त्रास आहे पहा, असा आमच्या बाईला त्रास आहे असं. आणि डिलिव्हरी बद्दल पण आम्ही खूप वेअर केलेला आहे की इकडे नाही का होम डिलिव्हरी करत होते, मग आम्ही सांगितलं की याच्यामुळे असा त्रास होते, बाळ व्यवस्थित राहिलं पाहिजे, याच्यासाठी तुम्ही या. मग आता त्यांना पण असं वाटतं की नाही आपले बाळ व्यवस्थित राहिलं पाहिजे, मी व्यवस्थित राहिली पाहिजे, म्हणून आता इन्स्ट्रुमेंटल डिलिव्हरीचं पण प्रमाण वाढलेलं आहे. A woman's health, especially among the poor and marginalized, is often neglected, not just by her family, but by the woman herself. This is where women like Champa make a difference. Champa is a government health worker or an ASHA worker who was trained by Parivartan, an Oxfam India partner, to enhance her role as a health activist. She educates and counsels the women in the community about the various provisions under NRHM and how to avail them. आगरी लोक मने किसी नहीं जानी थी इंजेक्शन बाबद रे कि केन आमर स्वास्थ्य विषय बोली किसी भी नहीं जानू थी. घर घर जाकर डाकले भी से मने नहीं आसू थी. आमर छुआ के इंजेक्शन नहीं देले क्या असुविधा है बागुने बोली करी आमके क्वेश्चन करू थिले. और नहीं एनएन दीदी आसी चन हेले घर के आसन आर दियो ना, आमे सेंटर के नहीं नो बोली करी कहू थिले. जे एबे से मन के आमे गलू बुझैलू नहीं जेनटा सरकार दौचे जेन टीका सबू दौचे तमर छुआ लगी केतेक सुविधा बोली तमे नहीं जानबार. तमे मने कर तमे छुआ के इंजेक्शन नहीं दौच जे हाथ गोटे गोड़ गोटे भी खुणिया ही जाऊे एटा क्या लगी होचे इंजेक्शन पत्र नहीं देवार जरूरी ही जाऊे बोली तांकर घर के जई करी बारंबार आमे बुझेइछु. The Village Health and Sanitation Committee is a committee constituted under NRHM to ensure community involvement for implementation of its program. In Odisha, this is known as Gaon Kalyan Samiti or GKS. Besides her role as a health activist, Champa is also an active member of GKS. Along with the Anganwadi worker in the village, Champa regularly participates in GKS meetings and encourages community members to put forth their suggestions and observations on how to improve the status of health and hygiene in their village. They prepare a plan to allocate activities for the untied funds provided by the government to GKS for maintenance of basic health and sanitation in their village. Now, the community members are enthusiastic about taking the agenda of health and sanitation forward in their village. They have collectively taken up the responsibility to clean and disinfect the areas surrounding the village hand pump, unclog the canals and clean their roads, as they understand that only by keeping themselves and their surroundings clean can they stay healthy and happy. Improving public health system is not limited to hospitals and health facilities alone. A significant part of it relies on ensuring the well-being of both women and children. The Integrated Child Development Scheme provides for supplemental nutrition to pregnant and lactating mothers and children between the age group of 6 months to 6 years. The GKS members ensure that the Anganwadis in their areas function properly so that both children and women can avail the benefits of ICDS. Even in the remote and underdeveloped parts of rural India, the positive effects of NRHM can be seen trickling down as a result of Oxfam India's initiatives. This is Runni Saidpur block of Sitamarhi district in Bihar, one of the poorest and socio-economically deprived districts in the state.
The single primary health center here was in dismal condition a year ago. Oxfam India, with the support of Bihar Gram Vikas Parishad, took an initiative to strengthen the Rogi Kalyan Samiti to improve the functioning of the PHC. Today, this committee also takes prime responsibility to plan and use government-supported funds in most efficient and effective manner in order to maintain the quality of services in the hospital. BGP के माध्यम से जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है पंचायत स्तरीय, वहाँ पर पहले लोग नहीं जाते थे PHC में प्रसव के लिए, अभी लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ बहुत सारी सुविधा दिया जाता है, लोगों को सुविधा मिलता है, पैसे भी उसके एवज में जो मिलना है वो मिलता है, समय पर मिलता है, दवा भी मिलता है मुफ्त में, वहाँ के स्वास्थ्यकर्मी हैं वो समय पर रहते हैं, काम करते हैं, तो अब बहुत फायदा हद तक सुधार हुआ है। The proactive villagers here have utilized the funds to create a raised concrete platform for the hand pump in their village. This, according to them, has multiple benefits. पहले कीचड़ रहा कल पर, कीचड़ से बहुत माने दिक्कत हुआ, बच्चा सब के अगर सियाना लोग के महिला सब निहाने गया कल पर, कपड़ा लता खींचे गया, बर्तन भरा धो गया, उसका गोर पैर पिछल गया, पैर पिछलने से किसको सिर फूट जाएगा, किसको गोर टूट जाएगा, किसको पैर टूट जाएगा, ऐसे कल के पक्का भी बन गया ना, तब पक्का से बहुत सुविधा है, पानी भरने में भी फायदा है, कपड़ा खींचने में फायदा है, बर्तन भरा धोने में फायदा है, निहाने सुनाने में फायदा है। Today, because of the efforts of Rita Devi, an ASHA worker in the village, an increasing number of women are having institutional deliveries, thereby setting examples for safe motherhood. गर्भवती महिला को समय समय पर सुइया दिलवाते हैं और सुइया दिलाने के बाद एक सब गोली उनको दिलवाते हैं, चौथा महीना के बाद गोली दिलवाते हैं। आते जब 9 महीना हो जाते हैं तो उनको PHC में ले जाते हैं और वहाँ डिलीवरी कराते हैं। मेरा 5 बच्चा है, जो 4 बच्चा घर पर हुआ, एक बच्चा जब अंतिम हुआ तो सब आदमी से बोले कि बहुत अच्छा सिस्टम हॉस्पिटल में होई है, तो हम हॉस्पिटल गेली तो वहाँ हमारा अच्छा व्यवहार, अच्छा सब चीज़ भेलक, बेड पर बच्चा हुआ, सब डॉक्टर सबके व्यवहार अच्छा रहे। ओकरा बाद हम फिर के घर अली, छुट्टी दे देलथिन, तो सब चीज़ अच्छा से हो गई, तब घर जैथिन तो घर अली, उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद 1400 रुपया मिलल, 1400 रुपया फिर गेली तो फिर दोबारा दिन 1400 रुपया लेके हम घर अली। Effective functioning of any development scheme ultimately lies in the hands of the community. Today, in each of these villages across India, people are beginning to reinstate their faith in the public health system with the hope of accessing quality health at affordable costs. Oxfam India's community-based health initiatives prove that if people realize their rights and are empowered to ensure its implementation, it would lead to an effective and efficient health system for all.